So, namaskar all of you. So, let us start then. My voice is clear. All of you are able to hear me. Yes, all of you are able to hear me. Yes. Okay. So, you can just, if you have any doubts or anytime if you want to ask anything, you can just ask me directly. Okay. Just unmute yourself and you can ask. Uh, while I'm teaching, I'll not be able to, refer to the message box. Okay. So you can directly unmute yourself and you can ask whatever you want to ask. So basically in today's class, I'll tell you what are the what is the structure and the things that we would be doing in this particular course. So our main aim would be to score at least in the range of 60 to 70 out of 100. Okay, in your interview, because nowadays they are not giving marks in the range of 90s like at one time, one point of time we were getting such kind of marks. ଏବେ କଣ ହଉଛି marks କୁ normalize କରିଦଉଛନ୍ତି. Okay, highest or lowest ଭିତରେ ଏତେ ବହୁତ ବେଶୀ difference 20-25 mark difference hardly ରହୁଛି. ତେଣୁ but still then ଯାହା ବି highest okay mark range ଟା ଥାଉ ଆମକୁ ପାଖାପାଖି ଚେଷ୍ଟା କରିବାର ଅଛି କି ସେଇଠି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ okay ଯାଇପାରିବୁ ଯେ. So କେତେଟା ଜିନିଷ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏବେ preparation କରିବୁ that we will be using. Okay, that I will tell you one by one. So first come to ଆପଣଙ୍କର structure of the classes etc. ତ ଆମର around ଏଥିରେ 10 theory classes ରହିବ. ତ theory classes ଆମେ କଣ cover କରିବୁ ନା important questions. Okay, important questions ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ interview ରେ ଯୋଉ ସବୁ questions ଆସେ. Okay, ଆପଣଙ୍କର CIF ଯୋଉଟା candidate information form okay ତା related ହେଲା कि जनरल क्वेश्चंस भी लास्ट ईयर पचरा है पिला को हॉबी ऊपर एंड ऑल ठीक अछि नॉर्मली अलगा इंटरव्यूज रे जेति की फोकस किबा जेति की मार्क्स रखा हुए ए जिंस नै जुडिशियल सर्विस इंटरव्यू रे सेटे कम जेतु हमरो लॉ ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चंस होइबो बट ए क्वेश्चंस भी आसुची ओके तो फॉर एग्जांपल कॉमन क्वेश्चन काहे कि तुमे जॉइन करिया पे चाहू छ जुडिशियल सर्विस व्हाई वुड यू लाइक टू जॉइन जुडिशियल सर्विस ओके मोर सो इन केसेस वेयर you have already done a LLM or PhD, आपन नेट क्वालिफिकेशन अछि ताले आपन एकेडमिया रे काई की जाउ नांती आपन एठी काई की आछंती ओके सो ऑल दीस थिंग्स वी हैव टू बी रेडी विथ द आंसर तो तार जो मॉडल आंसर्स करिका से गुडा पे आपन को ओके यू विल गेट थ्रू द ऐप रे म आपन कहि दोछि व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर तो ऐप रे आपन जेतन जाउछंती सो इन द ऐप आपन करा दिस इज अ मोबाइल आपन करा right hand side corner रे गोटे profiles बोली गोटे थिबो so you click on profiles once सेटा click हेले एडी ऊपर आपण देखिबे courses गोटे थिबो multiple tabs will be there one tab would be courses टा click करिवे तो जो माने ऐड हे चंती तो आपण कोर्स देखे दबो OJS 2022-23 इंटरव्यू बैच click on that सेटा click कला परे पुनी अगेन आ गोटे से सेथरे नेक्स्ट आपण देखिबे कंटेंट गोटे टैब थिबो ओके एंड इन कंटेंट देयर विल बी वेरियस सेटा सब बोते आज राती रे क्रिएट हबो गोटे थिबो वीडियोस क्लास वीडियोस ओके तो ए जो क्लासेस उडारो रिकॉर्डिंग करी के आपण सेटी पाइ जे से क्लास वीडियोस रे तापरे असला पुरा हम कहतली इंपोर्टेंट क्वेश्चंस तो क्वेश्चंस अलोंग विथ द मॉडल आंसर्स आपण ए फोल्डर रे पाइछबे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है ओके तापरे प्रीवियस ट्रांसक्रिप्ट्स एटा गोटे फोल्डर प्रीवियस ट्रांसक्रिप्ट्स कोन ना लास्ट ईयर की वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष आगु जो स्टूडेंट्स कने इंटरव्यूज देइथिले ओके ताकर केमति को इंटरव्यू खला ताकू केमति को क्वेश्चंस पचारथे ठीक अछि तो सेथरे आपनकर रहि गला ट्रांसक्रिप्ट्स ओके तापरे हमरो आज मंडे हला देन काली ट्यूसडे सो एई दी दिन हमरो बेसिक्स ऑफ इंटरव्यू क्लासेस गुडा वी विल कंप्लीट सो दैट आपन जेंते इंटरव्यू
Thursday ରୁ start ହବ mock. Okay, Thursday ରୁ mock start ହବ. Timing would be around 12 to okay 2:33 and 12 to 3 ଧରନ୍ତୁ. Okay, that would be the timing. ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ ବି ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ ଆଉ କ୍ଲାସରୁମ ରେ ବି ଆସିକି ଦେଇପାରିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଆଉ ୱାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବାହାରି ଯିବ शेड्यूल टा देन वी विल हैव द 3 पैनल इंटरव्यू ए जो एबे थर्सडे रो हबो एगुडा सब पैनल इंटरव्यू जेतरे 2 जन मेंबर्स रहबे। ओके बट ओपीएससी इंटरव्यू रे आपन को 3 और 4 मेंबर्स रहि पारे। ठीक अछि जनरली 3 रुहंती 4 भी केबे रहि पारंती। तो आपनकर सेगुडा हमर वन्स आपनकर शेड्यूल बाहरी गला पारे से इंटरव्यू जोडा रहबो। ओके सो दिस इज हाउ यू हैव टू एक्सेस द ऐप। ऐप को आपण एमती एक्सेस कर परिबे एंड ऐप रो वैलिडिटी 1 ईयर पई अछि। तो कोर्स विल बी एक्सेसिबल टू यू आफ्टर 1 ईयर। तापर इंपोर्टेंट जिंस हला आपण जहां भी इंटरव्यू दोचंती सो रिकॉर्डेड होची। ओके सो आफ्टर द इंटरव्यू 1 डे परे आपण को तार लिंक मिल जिवो रिकॉर्डिंग जोडा थिबो दैट लिंक विल बी एक्सेसिबल ओनली बाय यू। ओके आउ के भी सेटा एक्सेस कर परिबे से इंटरव्यू। ठीक अछि तो तेनो वन्स आपन को निजर लिंक मिल गला सेटा आपन जो जीमेल आईडी थ्रू रु रजिस्टर करछथि ता थ्रू रे आपन ताको देखि परिबे। दैट वुड बी प्राइवेट वीडियो ओनली दैट ईमेल आईडी कैन व्यू इट। ओके तो सेटा देखि सरले तेथरे कोन ना आपन को बेसिकली जानि परिबे कि मते कोन इंप्रूवमेंट करिवार अछि। सपोज मोर कंटेंट ऑफ द आंसर इज वेरी गुड बट मोटले यू नो आंसर दोछि मु बेसी एनिमेटेड हे जाउछ एक्सप्रेशंस अत्यधिक हो जाउछ। ओके सेगुडा आपन सेठी देखि कि ताको ठीक ठाक कर परिबे। तो सेगुडा लिंक्स यू विल गेट आफ्टर यू गिव द ओके इंटरव्यूज। इंटरव्यू रो स्लॉट जति बुक करिवार अछि यू कैन व्हाट्सएप मी। ओके को डेट रे आपन आसे भी चाहते तो मु से हिसाब रे ताको स्लॉट्स देते। ओके सो दिस वुड बी मोर और लेस। तापर आउ कोन कोन हम देखिबा तुम कहछि 10 टा थ्योरी क्लासेस हमर हबो। तो ए 2 टा थ्योरी क्लास बेसिक्स ऑफ इंटरव्यू आजि आउ काली रे सरी जिवो सो दैट वेडनेसडे गोटे दिन आपन पाए रहिला आपन टिके निजे जा प्रिपेयर करिवे थर्सडे रो इंटरव्यू स्टार्ट हे जिवो। ठीक अछि आउ तापर अलगा जो क्लासेस गुडा एगुडा मेनली रहइबो लीगल करंट अफेयर्स। ठीक अछि तो लास्ट ईयर बहुत क्वेश्चंस पढिला लीगल करंट अफेयर्स। ओके रिसेंटली कोन केस हे छि कि समथिंग रिलेटेड टू ओके important Supreme Court judgments last year, last 1 or 2 year, even Kalipod Nabi, जो जजमेंट उड़ा देइथिले सेडा भी पचार दोछन। ओके आगुरु उड़ा एते पचरा नथला आगुरु बहुत स्टैटिक थिंग्स उड़ा पचरा होतला कि आपन कोटा भल लागे आ ता ऊपर जे सिलेबस रे हमर थिला सेउडा पचारथिले। एथरो को सेमति किछि भी नथला लास्ट ईयर रो जदि हमें ओके देखिबा ताहले सिलेबस रे जहा जहा अछि ताठू खूब दूर रे भी पचारछन पिलांकू जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ऊपर पचारछन। ओके आपन को जो माने लेबर लॉ रे you know जो माने लेबर लॉज ऊपर पचारछन which are obviously not there in the OJS syllabus। तेनो इंटरव्यू पे सिलेबस स्पेसिफिक होत इंटरव्यू रे कथाटा हला इट्स लाइक ए ओके ओशन तुम तादर कोन से पचारबे वी डोंट नो हमको एति देखिबार अछि हमें मैक्सिमम केते कवर कर परिबा आउ जदि क्वेश्चन टा आसुनी ताको केमते हमें डील करबा ए दिन सोडा हमको देखिबार अछि। ओके लीगल करंट अफेयर्स हमें देखिबा आउ गोटे स्पेसिफिक वर्ड दीटा की तीनटा क्लास में देखिबी दैट इज बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन टा बहुत इंपोर्टेंट और बहुत पिला सेटा छाडी की भी आसोती कहि भी पारंती काहे कि ना से माने कोन ना नै नथन सेटा मेंस रे आ चिंता धाराटा भी एमती थाए कि वेल मु तो नै कॉन्स्टिट्यूशन मु काई सेटा ठीक रे पढी किंतु बहुत टाइम रे इवन आपण जदी कहिबे कि यू कांट से दैट मते कॉन्स्टिट्यूशन आसेनी कि मते भल लागे काहे ना आगु जाई कि आपण तारी फ्रेमवर्क पे काम करिवे राइट। तेनु कॉन्स्टिट्यूशन रो बेसिक्स उडा सेटा आपण क्लियर होबा दरकार स्पेशली फंडामेंटल राइट्स relative principle of state policies out the part related to judiciary एति की हेई गले भी ओके जा मेंस रे हमर मेनली पढुची तो मोर और लेस हमर काम हेई जिवो। ओके सो कॉन्स्टिट्यूशन पे हमें किछटा क्लासेस रखिबा। ओके सो दैट वुड बी बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ थ्योरी क्लासेस। ओके एंड नाउ लेट अस कम टू द बेसिक्स ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू रे कोन केमती आजि ठो आपण केमती कोन प्रिपेयर करिवे मु सेई जिंसोडा कहिबी। बिफोर दैट like 10-15 minutes we can have a discussion जो जदि आपनकर किछि भी डाउट्स अछि
related to the interview process, related to what you should do or what you should not do, etc., you can ask me. Unmute yourself and you can ask me. Good evening, sir. Uh, Kuantu. Sir, I joined late, so can you tell me how are we going to go about the theory classes? I missed that. Theory class. Okay, theory classes. Basically, what I said was, we will be having around 10 numbers of theory classes. Today and tomorrow, we will have the basics of interview so that you are at least ready to face the interview. Okay, all the manners, all the other things which we need for the interview, that we will see today and tomorrow's class. Every Wednesday we are having holiday, so Wednesday we won't be having any class or interview. Okay, Thursday we will start with the mock interviews. Okay, so timing of the theory class will vary. Okay, for example, tomorrow mostly we'll have it in the afternoon, and once the interview starts, interview timing will be 12 to 3. Okay, so at that time, in the evening, okay, or just after 3, we can have it. So anyway, that is what I was saying, what we will be covering, okay, in these theory classes. That was what I was. So, interview माने mock interview टा 12 ରୁ 3 ଭିତରେ ଆପଣ ନେବେ କହୁଛନ୍ତି। mock interview ର timing ରହିବ 12 ରୁ 3ଟା। ଠିକ ଅଛି ତ, ଯୋଉଟା କି 2 panel mock ଗୁଡା ଥିବ, ସେଗୁଡା 12 ରୁ 3ଟା ଭିତରେ ଆପଣ schedule କରିପାରିବେ। 12 to 3, 12 PM to 3 PM. Okay, except Thursday, all other days. ବାକି ସବୁଦିନ ଆପଣଙ୍କର ସେଟା ରହିପାରିବ 12 ରୁ 3ଟା। Okay. Okay, sir. Yeah, anything else? Anyone, if anyone wants to. OPSC रे माने what do you think likely केबे start हेबो interview, because हमें Thursday we don't have much time. A week रे will we be able to finish the theory class, because 10টা theory class में theory class 10টা theory class to ପ୍ରଥମ ଦିଟା important. Rest I will tell you what are the important questions and all. ଯୋଉଗୁଡା କି PDF ରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଥିବ app ରେ। Okay, important questions, ତାର model answers, ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ନିଜେ ବି ତାକୁ ପଢି ଦେଇ ପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି ତ, so ଆଜି ଆଉ କାଲିର theory class ଟା important। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦି ଦିନ ରହିବ ଯୋଉଟା କି କିଛି important cases ଆମେ discuss କରିବା, ଆଉ important some provisions of constitution। ଠିକ ଅଛି ତ, ସେଇ ହିସାବରେ, because those would go simultaneously। Thursday ରୁ ଆପଣଙ୍କର ये classes ବି ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର theory classes ବି ରହିବ, ଆଉ interview ବି ରହିବ। ଠିକ ଅଛି, so ଆପଣ sir ସବୁଦିନ ରହିବ, ମାନେ Thursday ପରଠୁ ସବୁଦିନ? Thursday every day except Wednesday। Wednesday ଟା ଛାଡି ଦେଲେ ବାକି 6 ଦିନ ଯାକ ଆପଣଙ୍କର everyday ସେଟା ରହିବ। Okay, every day then it will be slotted। Okay, 3 hours ରହୁଛି, ତ ଆମେ per interview 20 to 30 minutes ଦଉ। OPSC रे generally interview ଟା 15 to 20 minutes depending on candidates। କିଛି candidates को 30 minute भी ଯାଇଥିଲା ଆରଥରକ। Okay, it depends on what answers you are giving and also depends on the timing of the day। Okay, then you are the first person to go, then obviously ଆପଣଙ୍କୁ 20-25 minutes ଚାଲିବ। ଆପଣ last person to go, then in that case if you are not giving very good answers, तो maybe ସେଠି ଜଲ୍ଦି wind up ହେଇପାରେ। ପିଲାଙ୍କର ଆରଥରକ 9-10 minute ର interview ହେଇକି ବି ସେ select ହେଇଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି ତ, ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିବାର ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିବି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କେମିତି କଣ ହେଇଛି ମେନ୍ସରେ ସେଟା ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ପ୍ରୋସିଜରାଲ ଲ ରେ ମୁଁ ବର୍ଡର ଲାଇନ କେସରେ ଅଛି, ଓକେ, ମାନେ ମୁଁ କେମିତି ହେଲା ମୁଁ ଜାଣିନି, ତ in that case you have to ensure that you are getting very good marks in interview। ଓକେ, ନହେଲେ ସେଟା ବହୁତ ହି ତାପରେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଓକେ, କି ବେସିକାଲି ସେ ବର୍ଡର ଲାଇନରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଓକେ, ଯୋଉମାନେ କଟିବେ, ମୋଷ୍ଟ ଅଫ ଦେମ୍ ୱିଲ୍ ବି ଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ବ୍ରାକେଟ। ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇନଥିଲା, ବାକି ପେପର୍ସ ଭଲ ହେଇଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି, ପ୍ରୋସିଜର ଲ ପୁରା ଭଲ ହେଇନଥିଲା, ତାହେଲେ ସେଇଠୁ ଟିକେ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଟିକେ ବେଶୀ ଫୋକସ କରନ୍ତୁ। ଓକେ, that mark of 40 and a mark of 65 ସେଟା ହେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ହେଭେନ୍ ର ଡିଫରେନ୍ସ କରିଦେବ ସେଟା। ଠିକ ଅଛି, ସେଇଟା ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିବେ। Okay, so if you don't have any questions, I'll start with the basics of interview। ଆମକୁ interview ରେ କଣ କଣ କରିବାର ଅଛି, okay, those things I will start, and if you have any doubts you can ask। Okay, କିଛି ୱେଟ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେନି
कि गोटे जिनस आपको अपन ताको क्लियरली बुझिया पे चाहउछन कि आउट के डिटेल्स चाहउछन यू कैन जस्ट आस्क ओके जस्ट अनम्यूट एंड आस्क काहेकि हम व्हाइट बोर्ड रे लिखिला बेले मु आपनकर मेसेजेस कोन आछे सेडा मते देखबे देखिबा सो फर्स्ट लेट अस डायरेक्टली कम टू द इंटरव्यू रो केतेरा कार्डिनल प्रिंसिपल्स की रूल्स अछि okay so what are the cardinal rules first हला जोड़ा कि हला इंटरव्यू रो मोस्ट इंपोर्टेंट रूल आपन को मन रखियर अछि सेटा हला आई कांटेक्ट आपण जासन कथा हेबे इंटरव्यू रो क्वेश्चन पचरा हला तो आपण आई कांटेक्ट आपण को ओके प्रॉपर रहबार अछि 100% आई टू आई so okay number 1 is eye contact okay so eye contact should be the eyes of the examiner जे भी इंटरव्यूअर अछंती लेट्स से 3 जन की 4 जन बुद्धि बसथिबे ताले जे क्वेश्चन पचारला आपन को तो तांको आखि को आपन को देखिबार अछि अराउंड 90% टाइम बाकी 10% टाइम कि मझिरे मझिरे अन्य मानकर भी आई कांटेक्ट ओके एंड दोथिबे सो दैट मोनोटोनस लागिबो तो आई कांटेक्ट है फर्स्ट ओके अपन बहुत भलो आंसर करछन कि आई कांटेक्ट जदी नाही तो मार्क्स बहुत कटिबो कहिना भाबी किछि ओते लुक चोचंती किबा अंडर कॉन्फिडेंट अछंती दोस थिंग्स ओके तापरे सेकंड जिंसो इंटरव्यू रे नो गेसिंग नो ब्लफिंग आपण जानि जते आंसर भलो रे आंसर देबे आपण जाननांती सीधा कहबे मु जानि ओके बहुत पिला अछंती जो माने 10टा क्वेश्चन पचराला मु 4टा कहि पारलेनी 6टा बॉल रे कहिले आ मते बहुत भलो मार्क्स मिलछि ओके सो प्लीज कीप दीस थिंग्स इन माइंड सेटा गोटे भी बहुत इंपोर्टेंट है ओके so second hela no guessing no bluffing आउ केबे केबे एमती सिचुएशन आसीबो जोठी कि मु पूरा आंसर तो जानि नहीं पार्शियली जानि सपोज दे आस्क मी अ क्वेश्चन व्हिच हैज 2 or 3 parts करो 3 parts भितर मु जानछि दीटा पार्ट रो आंसर जानछि गोटे पार्ट रो आंसर जानि तो जोटा जानि से स्टार्ट करी भलो रे कहबी से दीटा थर्ड पार्ट रे क्लियरली कहि देबी सर एई पार्ट तो जानि ठीक अछि तेणु नो गेसिंग नो ब्लफिंग वो जो टिके स्मार्टनेस की जा भी हो से टिके देखिया पे मे आई गेस एटा पचर किछि दरकार नहीं ओके इफ यू नो यू आंसर इफ यू डू नॉट नो जस्ट very humbly let them know that you are not in know of that answer ठीक है अपन आंसर थर्ड हला most of the interviews will be very stressful okay कोन पई ना बेसिकली तांका तो सेटा गोटे प्रेशर आपण केते हैंडल करचंती सेटा से जानिया पे चाहिबे तो आपनकर सब टू बेस्ट वेपन कोन गोटे स्ट्रेस इंटरव्यू दैट इज योर स्माइल ओके तो स्माइल माने दांत देखा लिया कथा न ओके ओके स्माइल आपनकर रहबा कथा विदाउट एक्सपोजिंग योर टीथ एंड ऑल कि हसीबेनी कि ग्रीन करिवेनी ठीक अछि स्माइल रहबा कथा प्लेजेंट स्माइल रहबा कथा थ्रू आउट द इंटरव्यू बुझि परछन तेणु एटा भी आपन को माइंड रे रखिबार अछि कि देयर शुड बी ओके स्माइल टा आपण माइंड रे रखि ओके तापर नंबर 4 आंसर इन पॉइंट्स ओके सब बेले पॉइंट्स रे आंसर देबे एन्यूमरेट करिवे दे आस्क यू ओके what is the difference between this and that or let's say jaha bhi se pacharo do why you want to join this service so my first reason is this or firstly secondly semti apan kar paribe my first reason is this my second reason is this my third reason is this okay semti apan kar paribe buji parle so always answer in points or enumerate the answer
Okay, answer in points or enumerate the answer. So these are the cardinal or the golden rules of interview. You don't have to like ଯେମିତି ଆପଣ mains ଲେଖୁଛନ୍ତି introduction to start କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ସେମିତି ନାହିଁ ଏଠି directly ସେ କଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି without giving any introduction or prelude ଆପଣ directly okay so suppose ପଚାରିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ कि let's say what are the characteristics of ଯାହା ବି ସେ ପଚାରିଲେ ତ ଆପଣ immediately ସେତିକି କହିବେ ସେ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି first ସେଇଟା କହିଦେବେ ତାପରେ ଯଦି ସମୟ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ପ୍ରାୟ କେବେ ମିଳେନି ସମୟ ଯଦି ଅଛି ତାପରେ explanation କୁ ଯିବେ don't start with explanation okay just give them what they want ସେ ଯାହା ପଚାରିଲେ exactly ସେ ଆପଣ କହିଦେବେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ in points ସହିତ କହିବା ପାଇଁ opinion based questions ଯଦି ଆସିଲା ତାହେଲେ ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ points ରେ answer କରିବାର ଅଛି ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି why do you want to join this service what are you going to do if you are not selected ଏଇ type ର ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ଠିକ ଅଛି so those things you have to keep in mind okay so just to recap eye contact 100% okay 90% to the person with the person जे की क्वेश्चन पचारले 10% बाकी जो माने ताका संगे बसथिबे गेसिंग ब्लफिंग किछि करिवेनी जोटा पूरा श्योर अछंती सेटा ही कहबे बाकीटा पूरा ओके नम्रता सहित कहि देबे ना मते आसुनी ठीक अछि काहे कि ना जदि आपण ब्लफ करिवे बहुत सीनियर लोक से माने हाई कोर्ट जज जने थिबे एकेडमिया रु के गोटे वाइस चांसलर लेवल रो की वेरी सीनियर प्रोफेसर लेवल रो के जने थिबे ओपीएससी रो मेंबर जने के थिबे राइट वेरी सीनियर पीपल इफ दे कैच यू ब्लफिंग ताले इंप्रेशन तो जा खराब होबो ओके मार्क्स भी से हिसाब रे कम आसीबो रादर 10 टा क्वेश्चन पचारले मु 7 टा भी न कहि परली किंतु मु क्लियरली विथ स्माइल कहि दउ कि नहीं सर मते आसुनी ओके ताले दैट इज बेटर रादर देन यू नो गिविंग माने जो आंसर रखुची मुंडो गोडो नथिबो सेही टाइप रे आंसर दबारो नहीं ओके दी प्रकार रो क्वेश्चंस पचरा हुए गोटे हला फैक्चुअल क्वेश्चन हाई कोर्ट ऑफ ओडिशा केबे एस्टैब्लिश हेतिला जेबे हेतिला केतेटा ता स्ट्रेंथ केते थिला हाई कोर्ट ऑफ ओडिशा ओके फर्स्ट चीफ जस्टिस के थिले हाई कोर्ट ऑफ ओडिशा आ केतेटा सेते बेले वुमन जजेस थिले ओके फर्स्ट हाई कोर्ट एकुरा जदी पचरा हबो आ आपण जानि नांती इट इज एक्सेप्टेबल ठीक अछि हिस्ट्री ऑफ यू नो जुडिशियरी इन ओडिशा जानि जानना understood who is the first woman chief justice okay so who is the first woman judge in india एमती जदि कोन पचरा हला जानि नी ठीक अछि ओके आपण को जिल्ला रो जिल्ला जज के अछंती जानि नी चलिबो ठीक अछि but if they ask you certain basic questions okay कि ओ फंडा एटा अर्थ को बहुत जन को पचराई और ता ऊपर बहुत क्रॉस क्वेश्चन भी जेमते कि वो फंडामेंटल राइट टा आपन को लागुची सब सबटू इंपोर्टेंट अपन के जण 14 कहले के जण 21 कहले अपन जा भी कोन के जण 32 भी कहले ओके अपन जा कोन ताको अपन को एक्सप्लेन करिया पड़े कुछ कहले तेनु फैक्चुअल क्वेश्चन यदि केटा भूल हे गला किछि व्यस्त हेबेनी ता पई एते मार्क नथे किंतु ओपिनियन बेस्ड और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यदि भूल होची कि आपण छाडी दोचंती ताहले सेटा तार टिके इंपैक्ट हबो स्कोर रे नेगेटिव इंपैक्ट हबो बुझि परबे तो गेसिंग ब्लफिंग करिवे स्माइल ता सब बेले मेंटेन करिवे आ स्माइल ता मेंटेन करि माने मु केम जानछि मु स्माइल करछि कि नहीं मते लागुछि मु स्माइल करूछि बट से लोको को सेंति देखा जाउ नथि सो फॉर दैट इट इज वेरी इंपोर्टेंट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आपण मिरर इंटरव्यू समझते ट्राई करिवे ओके मिरर इंटरव्यू समझते ट्राई करिवे मिरर इंटरव्यू कोन ना जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन रो सेट छुआ मु देबी ऐप रे आपण 50 60 टा क्वेश्चन थिबो तो ताको डिवाइड कर दियो सेट ऑफ 10 15 क्वेश्चंस फॉर वन इंटरव्यू ओके आपण को मिरर रे सपोज दिस इज अ मिरर चारिटा क्रॉस सेठी मार्क करंतो स्केच पेन रे कि जो थरे लेखा ही परिबो सेतरे एंड नंबर देम 1 2 3 4 अवश्य आपण तीन जनकर तीन जणिया बोर्ड थाई पारे आपण चार रे प्रैक्टिस करो ओके so these crosses are the eyes of the four interviewers now you read a question why do you want to join judicial service okay seta bhabantu one pachach so as if you are answering looking at the eyes of one
ओके इंटरव्यूअर 1 आपण आंसर करो मझे मझे 2 3 4 को भी देख दो सेमती नेक्स्ट क्वेश्चन आपण भावंतु 2 आपण को ओके पचारछथि ठीक अछि तो चा विषय पचार तो सेमिति आपण इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को डिवाइड करके आपण दबो ओके मॉक इंटरव्यूज निजे तक मिरर इंटरव्यूज कहती मिरर इंटरव्यूज दे परिबे स्पेशली जाकर स्पीच क्लियर नहीं ओके जाकर स्पीच क्लियर नहीं से माने एगुडा सब कर परिबे जाकर स्पीच यदि क्लियर नहीं तो these things you can do if your speech is not clear etc okay that you can do speech टा आउट क्लियर हो आपण ओके आउ फ्लुएंसी टा बढ़िबो फ्लो ऑफ स्पीच टा बढ़िबो ओ जो अछन बहुत आस्ते आस्ते कोंती जिंसटा सेठी एते टाइम मे भी देई न पारा okay so that is your mirror interview very important rather you can start from today itself okay you make sets of 15-20 questions ask yourself those questions in this manner तो एथर आई कांटेक्ट भी आपन को परफेक्ट रही गला ता सहित आपनकर प्रैक्टिस भी हे गला तेनु normally OPSC interview will range from 15 to 30 minutes एथर पिला कम अछंती तेनु 15 to 30 minutes आपण भाभी परिवे आर वर्ष 9 मिनिट 10 मिनिट रे भी पिला को ओके इंटरव्यू नै छथि बट एथर पिला कम अछंती आ तेनु सेथरे आपण एक्सपेक्ट करबे कि मिनिमम तो 15 मिनिट इंटरव्यू होबो बहुत भलो कहले कि ताको जदी आउरी इंटरेस्ट अछि पिलाटा को जानिया पे कि हां से आउर तक केते नॉलेज अछि तो 30 मिनिट्स पर्यंत चले कुछ क्वेश्चन सो ए जो मिरर इंटरव्यूज उडा आपण ट्राई करिवे एंश्योर दैट द ड्यूरेशन इज 30 मिनिट्स प्लस ठीक अछि तो आपण 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चंस जते क्वेश्चन दरकार ताको रेडी कर देथिबे एंड आंसर ओके आउ सबोडा पॉइंट्स रे आंसर करिवे एन्यूमरेट करके आंसर करिवे my first point is this my second point is this or firstly secondly job okay सब आंसर सुना प्राय पॉइंट्स रे देले ही भलो मेन से जिंते अपन देखु चंती पॉइंट्स रे आंसर करछंती एग्जैक्टली सेमती इंटरव्यू रे भी चेष्टा करिवे कि पॉइंट्स रे अपन एंते आंसर करछो okay so these are some of the important rules which you have to follow cardinal rules उडा रहले आउ केतेटा जिंसो जोडा कि अपन को जानिबा दरकार इंटरव्यू प्रिपरेशन पाई तो हाउ यू विल एंटर हाउ यू विल एग्जिट सेटा जेतले आपण फर्स्ट मॉक को आसीबे आ सिटिंग पोजीशन कोन सेटा एटी देखि किछ लाभ नै सेटा फर्स्ट इंटरव्यू को आसीबे सेतले मो रेक्टिफाई कर दे जार बहुत थिबो अरे मो करि दे नॉर्मली आपनकर मेरुदंड सीधा रहइबो स्ट्रेट बसिबे डिपेंडिंग ऑन योर हाइट योर palms should be on your knees so that they are locked हाथ आउ बुलिबा कथा न कथाबार्ता कला बहुत जनकर सेमती हुए स्पेशली जो मानकर किछि टीचिंग एक्सपीरियंस अछि से मानकर कोन ना सबकॉन्शियसली से माने कहउतिबे आंसर ता ओके आउ हाथ भी मूव करतो सेटा बहुत ही ऑड देखाबे तो सेटा गोटे जिंस सेकंड हला क्रॉस लेग्ड बसिबे गोड़ छंदी की बसिबे सीधा गोड़ रखी की बसिबे ओके आपन को लागुति एडी किछि कवर्ड अछि टेबल देखा जाउनी बट तारो भी जिंस समान जदी काल मार्क करिवे तो they'll take offense okay how what is it apanଙ୍କର ଗୋଟେ ହେଲା କି you don't have to think much about attire टा किबा जो ड्रेस जे आपण पिंदिबे सेटा जुडिशियल सर्विस में ब्लैक एंड व्हाइट एबे आपण कोथरे कंफर्टेबल सेटा आपण देखि परिबे फॉर एग्जांपल जो माने मेल कैंडिडेट्स अछंती आपण ब्लैक टाई एबे तो शीत दिन अछि तो ब्लैक टाई और फुल शर्ट व्हाइट फुल शर्ट और ब्लैक फुल पैंट पिंदि परिबे जो माने ब्लेजर रे कंफर्टेबल अछंती कि 3 पीस की 2 पीस सूट रे नॉट 3 पीस बेसिकली 2 पीस सूट रे कंफर्टेबल अछंती आपण सेटा भी पिंदि परिबे ओके अलोंग विथ टाई ठीक अछि बट टाई टा हेले बोलो और जदी ब्लेजर अछि और आपण कंफर्टेबल अछंती जहां भी आपण जदी ब्लेजर पिंदि होली भाबुचंती तने एबेटू प्रैक्टिस करिया पे पड़िबो ठीक अछि त आ शूज तो रहइबो तेनु आपनकर बेसी किछि असुविधा नै सेमती फीमेल कैंडिडेट्स कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू whether you would like to wear a black sari okay white and black sari जोटा कोट रे पिनते किबा सलवार कमीज अपन पिन करे ठीक अछि तो सेतरे अटायर रे एते किछ बट अटायर हैज टू बी विद इन दिस ठीक अछि तो आ किछ फैंसी अटायर हम पिन करे अटायर टा हमर एते गला तापरे आ गोटे जिंस होला कि
जेहेतु डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करिका सेम डे रहइबो आपन को टिके माइंड रे रखिया पे पड़िबो कोन ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रे जहा जहा कहिचे ई डॉक्यूमेंट नेकी जिवे ताको आगुरु टिके भल रे देखि देबे सो दैट सेठी कोन से सरप्राइज जेमति आसीबो सेठी आपन केमति आपन टेंशन रे पसिबे ठीक अछि अदरवाइज टिके भी किछि भूल बारले से माने बहुत पुरे आपन को यू नो दरकार बिना आपन को टेंशन दे देबे तेनो ensure that whatever is required you have taken all the documents जति दरकार अछि दीटा सेट्स तार भी नै जान ओके ओरिजिनल सहित just to you know to be safe ओके तापरे टिके आगुरु पळेबे आधा घंटा आगुरु देरी करिवेनी जाई कि बसी की सेठी न्यूज़पेपर की नोट्स नै जिवे बसी की पढिबे सेठी डू नॉट गॉसिप विथ अदर कैंडिडेट्स से ता भीतर ओके काहे कि ना बहुत सीनियर पिला भी थिबे ताको भीतर एंती पिला थिबे जे 3-4 थरो दैछन इंटरव्यू ठीक अछि तो ସେମାନେ they are adapted with the process ତେଣୁ you know ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ଦେଖି ମ୍ୟାନିପୁଲେଟ ବି କରନ୍ତି କି ଏମିତି ହୁଏ ସେମିତି ହୁଏ ଯେମିତି ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଛି ହୁଏ ତା ଭିତରେ ସେମିତି ମିଷ୍ଟେରିୟସ୍ କିଛି ହୁଏନି ସିଧା ସାଧା ଜିନିଷ ଆପଣ ଭଲରେ ଯିବେ ସେମାନେ ବହୁତ କୋଡିଆଲି ପଚାରିବେ ଓକେ ଆପଣ ଯଦି ଆଡୁ ସାଡୁ କିଛି ନ କହିବେ ବ୍ଲଫିଂ ନ କରିବେ इंटरव्यू बहुत भलरे ଯିବ ठीक अछि ଆପଣ ଯଦି ସେମିତି କିଛି ବ୍ଲଫ କଲେ କିମ୍ବା ସେମିତି କିଛି यू नो आउट ऑफ द बॉक्स भाबी भाबी କିଛି ଆଡୁ ସାଡୁ आंसर देई देले ताहले असुविधा हेइ पारे ठीक अछि जस्ट रिमेंबर जे बसिथिबे मोस्टली जने हाई कोर्ट जज ओके सिटिंग जज बसथिबे सेठी तेणु सेही हिसाब रे गोटे जिंस था ना गोटे नो इट ऑल गोटे एटीट्यूड था क्या पचारले माने यू आस्क समवन ए क्वेश्चन से बढ़िया आंसर टा देबे बट द एटीट्यूड विथ व्हिच वन इज आंसरिंग सेटा जने टिके हॉटी टाइप का एटीट्यूड अछि ओके माने मैन हु नोज एवरीथिंग और वुमन हु नोज एवरीथिंग सेही टाइप का एटीट्यूड अछि सेहीटा टोटली माने टॉलरेट करत आपण सब जिंस ठीक रे कहिबे किंतु सेहीटा जदी गोटे इंप्रेशन गला आपण जा कोंतु जेमति कोंतु आपण केबे मार्क आपण देखिबे जो जो माने बहुत भलो मार्क्स बादे एंड दिस इज स्पेशली इन केस ऑफ ओचेस ओके सिविल सर्विस चलिबो अछंती पिला जे सेमति यू नो भलो मार्क्स भी पाई जंदी ओके बट जुडिशियल सर्विस रे बहुत डिफिकल्ट उल्टे एठी कोन ना जे बेसी हम्बल और नम्र थिबो से जदी भाई 10टा क्वेश्चन टू 7टा न कहि पारला ताको भलो एक्सेप्टेबल मार्क मिल जिवो rather than someone you know who has some kind of a attitude how say 10टा क्वेश्चन रू 9टा भी आंसर कर दितनी बहुत भलो रे ओके बट मार्क्स सेते भलो न आसे ओके तो सेटा आपण मिरर इंटरव्यू रे आपण को देखिबार अछि एठी भी तो ऑब्वियसली हमें मॉक इंटरव्यू रे सेटा देखियो जदी हमें देखिलु कि एटा सेमति अछंती विल टेल देम कि नै आपण को एटा टिके कर्व करिया पे पड़िबो आपण इंटेंशनली न करि पारंती बट व्हाट इज द मेसेज दैट गोस थ्रू सामना वालो कोनटा रहउछ सेट पई से वीडियो रिकॉर्डिंग टा एनालाइज करिवाटा बहुत ही इंपोर्टेंट ओके आपण भाबुचंती मु स्माइल करि कि कहूची किंतु सेटा एक्चुअली फुटी कि बाहर नहीं ओके तो सेटा एतले मु रिकॉर्डिंग रे देखि अरे मु तो स्माइल करथि मते लागुतला मु स्माइल करछि किंतु एठी तो एंती देखाइलुटी कि लाइक मु पर एते सीरियस अछि okay so that is why the video recording or analysis proper analysis of the video recording is required सेटा आपन को करिया पे पड़िबो ठीक अछि तापरे once you go to the waiting room तो सेठी जा आपन डॉक्यूमेंट आपन को लॉकर जदी देबे सेठी रखि देकी बसले go in okay आ गोटे जिंसो इंटरव्यू बोर्ड पाखरे आपनकर आगो हिस्ट्री एजुकेशनल बैकग्राउंड जहा सीआईएफ रे दिया हेची ओके कैंडिडेट इंफॉर्मेशन फॉर्म रे ता छोड़ा अलगा किछि इंफॉर्मेशन ताका पाके न थाए आपण मेंस रे केमिति करचंती केते मार्क रखचंती के सी किछि जानना तो आपण सीआईएफ रे जहा लेखुचंती तारी ऊपर से माने आपण क्वेश्चंस पछरे ओके सो सीआईएफ रे मु कोन लेखुची सेटा बहुत इंपोर्टेंट ठीक अछि फॉर एग्जांपल एंड देयर आर सर्टेन थिंग्स जोडा कि आपण डिस्क्रिप्शन रे अछि फॉर एग्जांपल आपण पीएचडी करचंती लॉ रे ओके बट एठी तो दरकार नहीं पीएचडी तो आपण चाहउचंती मु एलएलएम पीएचडी एटा देखिबिनी बहुत भलो कथा आपण कहिछ बट उल्टाटा जदी मु देखिबी मु पीएचडी करिछि और लेखुछि सेठी मु पीएचडी करछि ह्यूमन राइट्स से ओके कि ह्यूमैनिटेरियन लॉ रे जो थरे मु करछि कमर्शियल लॉ रे और से मते बेसिक क्वेश्चंस पचारले नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट मु कहि परनी whereas मु पीएचडी करछि त ऊपर सेही सिचुएशन जेंति न हो ओके आपण जदी मास्टर्स कर दै चंती बट एते भलो रे करनांती आपण डिटेल्ड एते यू नो रिगर जोटा कि एकेडमिक रिगर सेते नथिला आपण जो जगह रे पढुथिले ताहले बेटर ताकू यू नो किछि न करी कि गोटे डर सब पिलांगर थाए पचार देबे
5 वर्ष कौन करथुला 10 वर्ष कौन करथुला प्रिपेयर करथुले आज पन प्रिपेयर ही कर ओके ता ऊपर पुनी क्रॉस क्वेश्चन है पारे कोन एते वर्ष प्रिपेयर करले केमती सस्टेन करथुले कोन करथुले फैमिली सपोर्ट करथुला ओके ट्यूशन्स करथुले करूची ठीक अछि त सो सेटा टिके आपण भाबिया पड़ियो राइट काहे ना you should not lie but at the same time you should not be an open book ठीक अछि से तार रिक्वायरमेंट हैला एलएलबी आपनकर थिबा दरकार आपण तार जदी बहुत अधिक भी क्वालिफिकेशन रखी छथि एंड यू आर कॉन्फिडेंट काहे ना इट कैन हेल्प अ लॉट मु पीएचडी करछि गोटे जिंस ऊपर सपोज मु चाइल्ड राइट्स ऊपर पीएचडी करछि मते पोक्सो एक्ट ऊपर बहुत गुडे जिंस पचारले जोटा कि मो सिलेबस रे नाही किंतु जेतु पीएचडी करछि आई एम एक्सपेक्टेड टू नो अब मु जानि छी बहुत भलो रे तुरंत ओके मु सब आंसर कर देली कि प्राय आंसर कर देली तो हे गला मु काम सेथरे दे वुड बी वेरी इम्प्रेस्ड okay so it is a double edged sword higher qualification is a double edged sword seita properly bhabi diyontu mu CIF रे कोन लिख okay all of you have the CIF OPSC or site to download कर परिबे okay that is your CIF the biodata form the कहउछंती okay and the attestation form तो एबे बोथ इंग्लिश और ओडिया रे अवेलेबल अछि अटेस्टेशन फॉर्म आपनकर जो इच्छा फिल अप कर परिबे ओडिया रे चाहे ओडिया रे फिल अप करंतु इंग्लिश रे ना इंग्लिश रे फिल अप करो ठीक है बट से अटेस्टेशन फॉर्म से पड़ो जाए इट इज ओनली फॉर ऑफिशियल पर्पस जहां बोर्ड पाक को जाए दैट इज ओनली द CIF ओके सो CIF रे ताले हम एमती कोन इंफॉर्मेशन दोउछु जोटा कि भाबी चिंती के दबार अछि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन तो कि भाबियार नै लास्ट 5 वर्ष आपण कोठी थिले को जगह रे थिले ठीक है तो सेटा तो फैक्ट आपण लिखिबे सेही जगह रे टिके जुडिशियल प्रोसेस ता जानिया दरकार ओके सपोज आपण 10th करचंती बरगड रु करचंती ओके +2 आ गोटे जिल्ला रु करचंती आ LLB आ गोटे जिल्ला रे तीनटा जिल्ला रो ओके कोर्ट्स केते अछि कोर्ट काउंट केते करेंटली डिस्ट्रिक्ट जज को माने अछंती ओके टिके टिके जानथिले भी किछ असुविधा नै ओके जदि ए क्वेश्चन पचारे आपण कहि परनते इट इज फाइन बिकॉज़ एटा फैक्चुअल क्वेश्चंस ठीक अछि तो कोन इंपोर्टेंस अछि से डिस्ट्रिक्ट रो आगुरु एगुडा जुडिशियल सर्विस इंटरव्यूज रे एते पचराउ नतला एथर को पचराउ छी आर्थर को जे नॉन लॉ मेंबर थिले माने जे की डोमेन एक्सपर्ट नु हो जे आपण हाई कोर्ट जज आ जने एकेडमिशियन जे आसीबे से माने तो लॉ रो ही आसीबे ओपीएससी रो मेंबर जे थिबे से मे बी से लॉ रो नु से बेसिकली वो जेनेरिक जिंस कोन आपण पचरि पारो ओके सो एगुडा आपण को प्रिपेयर हेकी रहया पे पड़ियो CIF रे एक्सक्यूज मी मात्र दीटी जिंस अछि जोठी कि आपण जहां आपण लिखिए ता ऊपर क्वेश्चन पचरिबे कोन नंबर 1 हला CIF रो डिटेल्स मु काली कहबी मु जस्ट ओवरऑल कहूछ गोटे गोटे कोथरे कोन लिखियाला सेटा मु काली कहबी गोटे हला हॉबीज ए तीनटा जिंस देछि गोटे हला हॉबीज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ओके हाउ स्पोर्ट्स ए तीनटा भीतर सो इफ यू हैव सम हॉबी यू कैन राइट हॉबी जदी नाही छाड़ दे ओके समस्तଙ୍କର जे हॉबी अछि सेमति माने नाही तापर आसले एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आपण एनसीसी एनएसएस ओके जहां भी आपण एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जदी माने जदी ओके सेगुडा सेठी लिखि पारे आ गोटे स्पोर्ट्स रे एटलीस्ट स्कूल लेवल रे रिप्रेजेंट करचंदी जदी ओके ताले भी आपण लिखि पारे तापर आ गोटे ता तोडे गोटे इंपोर्टेंट आसीबो सबले मन रखिबे जो अचीवमेंट सुडा आपनकर अछि ओके से स्पोर्ट्स ओकर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ता तळे ओके तो सेटा आपन के देखिया पड़िबो कोन ना स्पेशल अचीवमेंट्स से देख तो आपन को भाबियार अछि मत कोन स्पेशल अचीवमेंट्स अछि स्पेशल अचीवमेंट्स मेनली हमें तीन प्रकार रो देखुछु गोटे हला प्रोफेशनल अचीवमेंट्स सपोज रे स्टूडेंट आपन प्रोफेशनल अचीवमेंट कोन आपन स्कॉलरशिप पाइ जंती यूजीसी नेट क्वालिफाई करछदी लॉ रे ठीक अछि से गुडा लिख पारि गोल्ड मेडलिस्ट आपन आछंदी पाइ जंती गोल्ड मेडल पाइ जंती यूनिवर्सिटी से गुडा लिख पारि आपन से गुडा से प्रोफेशनल अचीवमेंट एजुकेशनल अचीवमेंट्स आसे चाकरी रे जदी अछंदी और यू हैव बीन अवार्डेड बेस्ट एम्प्लॉय या भी प्रोफेशनल अचीवमेंट आसे तापर आसी गला आपनकर सोशल और कम्युनिटी लेवल अचीवमेंट्स कोविड बेले मु माने यू नो पुअर और नीडी लोगों को हमें खाइबा देथिलु फ्रॉम एनजीओ मु सेतरे पार्टिसिपेट करथिलु मु ब्लड डोनेशन करछि एते तरह ठीक अछि से गुडा सब सेतरे गल एंड अदर टाइप्स ऑफ आपनकर अचीवमेंट्स जा भी अछि
personal achievements. Okay, segura be apna personal achievement mane not on the relationship fronts. Okay, but basically personal achievements like apna individually kichi gote karchanti society pai ठीक अछि segura भी दे पारे तो से achievements से बहुत blank check दियो special achievement मु सेमति किछि करिनि okay but everyone has some special achievement apna भाबंतु कोन गोटे थिबो ठीक अछि where you help the society समस्ते को बाटर सोसाइटी की हेल्प करछथि राइट तो सेटा टिके भाबि ना ब्लैंक छडिया कथा नु आ जदि आपनकर पूरा माने जेमति कि आपण क्लैट रे बहुत भलो रैंक रखि दिले एडा सब अचीवमेंट्स रे गोल्ड मेडलिस्ट थिले टॉपर थिले को पेपर रो आपण यूनिवर्सिटी रे सब कोइ पारि से दुर क्वेश्चंस भी आसीबो सपोज आपण क्रिमिनल लॉ रे ओके टॉपर थिले हाईएस्ट मार्क्स थिला तो you can expect more questions on crime and criminal law कुछ कर तेणु सीआईएफ टा टिके भलो करी भरिबे सेटा भाबी चिंती की भरिबे और जदि किछि डाउट्स अछि मते थरे देखै देबे ओके व्हाट्सएप कर देबे सेटा once you have finished writing your CIF then send it to me I will just verify it केते केते जगह रे कोन ना बहुत जण ओवरडू कर दियो 8टा अचीवमेंट्स देछ दरकार नै 3टा अचीवमेंट मैक्सिमम ओके 8टा अचीवमेंट्स आ गोटे हला अचीवमेंट रो को एज रो धरते okay so that is middle school रो आपण धरि माने 8th standard रो धरि हम क्लास 2 रे फैंसी ड्रेस कंपटीशन रे फर्स्ट हेतिली और सेटा लिखिया दरकार नै ठीक अछि 8th standard एंड अबव कुछ बोले एटा एटा खाली मु तापु आउरी डिटेल्स आपण को एटा कहि each column रो each point रो कोन कोन हमको लिखिबार अछि okay so you can eporjanto jaha कहली if you have any doubts if you have any questions then you can ask So I have a question. please ask So how are the marks bifurcated in interview, like for dressing and personality and the way we answered the question and other things? How are the marks bifurcated in that out of 100? exactly that depends on the discretion okay uh, normally what happens is two components are there of the answer one is the content one is the presentation that means what you are saying and how you are saying okay both are equally important so suppose your content is very good but the way you present it is very dull okay then you will not get good marks you'll get average marks on the other hand your content is bad but your your expression is excellent okay there also you will not get okay lot of marks so those things it has to be a balance between content and presentation don't get too animated you can see previous years okay all the the videos which are there the people who have got ranks different uh, candidates have their style of speaking so that we cannot change okay but it is better to have a balanced view okay especially in case of opinion based questions जदि किछि controversial question पचारले आपनकर रिजर्वेशन विषय रे मत कोन आपनकर जुडिशियल रिफॉर्म्स विषय रे मत कोन ठीक अछि सेगुडा भाबी चिंती के आंसर दबार अछि okay you are not there to become a revolutionary कि अपन सिस्टम टाकू पूरा revolutionize कर देबे सेटा तो आपन का एम न ना तो आपन सिस्टम रो पार्ट हेबे तेनु सिस्टम रे जो जो असुविधा अछि ओके ताकू केमिति मु गोटे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करिया पे चाहू कि हम जुडिशियल सेटअप रे एई प्रॉब्लम्स अछि ताकू मु केमिति प्रेजेंट कर मु एमति तो प्रेजेंट करबिनी
कि हमारा ए जुडिशियल these are the lacuna in our judiciary, this one, सेमती देखो अभी ओके तो आपण कहबे केमती तो फर्स्ट एला कि लेट्स से हमरो डिस्पोजल ऑफ केसेस ओके सो सबुले पॉजिटिव एस्पेक्ट देखा कि in last 10 years disposal rate has increased a lot okay although still there is lot of pendency disposal rate has increased a lot when you are comparing last 10 years this is due to various factors like the courts okay giving lot of importance on timely trial of cases use of technology आगुन जदि आपण जानथिबे कॉज लिस्ट वरिका बाहर ओके मैनुअली तो इट इज एडवोकेट पे भी हेडेक क्लाइंट पे भी हेडेक एबे सब ऑनलाइन अछि ओके एंड आल्सो थ्रू वर्चुअल हियरिंग्स ठीक अछि इवन आफ्टर कोविड वर्चुअल हियरिंग होछ आपण तो एथरे कोन एक्सेसिबिलिटी टू जस्टिस भी बढ़ुची कॉस्ट बहुत आकार में कमुची ओके सो से पॉइंट्स पर दैट मींस इवन इफ यू आर क्रिटिसाइजिंग ओके हां ताले हमें एया करिछि गवर्नमेंट बहुत भलो आउ एया कले आउरी भलो हो ठीक अछि दिस इज द वे हाउ टू constructively criticize okay that means these things have been done well and good if these things are done it will improve further good question so how you present it is very very important सबोले मन रखिबे केबे भी confrontational okay vitriolic controversial type of comments केबे भी देबे because you are an aspiring civil judge okay तेणु सेटा धरंतु आपण को गोटे किछि गोटे पचरा हला लेट्स से व्हाट इज योर ओपिनियन because that is one of the major verdicts of this decade so analyze okay as a student of law analyze the Ram Mandir verdict ठीक अछि so there dispassionately आपण को as a student of law करे पे पड़ियो कि basically say case ta was okay it was based on a title okay ଗୋଟେ ଜାଗାର ଟାଇଟଲ ଉପରେ ହିଁ ଥିଲା ଆଉ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ତାରି ଉପରେ ଆଡଜୁଡିକେଟ କରିଥିଲେ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ has not gone into the question of faith nowhere has supreme court said that whether Bhagwan Ram was born there or not born there that's a question कथाटा ହେଲା हिस्टोरिकल रेकॉर्ड्स को देखिकी से ଜାଗାର ମାଲିକାନାଟା ଓକେ ଜଣା ପଡୁଛି କାହାର ଅଛି ସେଇ ହିସାବରେ ସେ ତାଙ୍କ ବଡିଟା ଦେବେ ବସ୍ ସରିଲା ମୋଷ୍ଟ ନନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଆଲ आंसर जदि ଆପଣ ସେଥିରେ अलग जिनस पसेबे तो कंट्रोवर्सी आसी ओके सो यू हैव टू आंसर एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ ओके नॉट एज ए पॉलिटिशियन और नॉट इवन एज ए सिविल सर्विस एस्पिरेंट आपन को बहुत भीतर केजन अछंती जे सिविल सर्विस में प्रिपेयर करछथि जुडिशियल सर्विस संगे तो सेठी आ आपन को जो सिविल सर्विस रे जेमति आपन बहुत गुडे डायमेंशन रो देखुछथि एठी टिके सेला कमे देबे ओके एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ एज ए प्रोस्पेक्टिव सिविल जज जेति कहया कथा बेस्ड ऑन फैक्ट्स ओके ओपिनियन निजर बहुत आड़ को नहीं चुके ठीक है माने विदाउट कंक्रीट एविडेंस ओके एम्पिरिकली अपन पळेबेनी कि मो हिसाब रे या होगा कथा नेवर ठीक अछि डाटा ए कहूची ओके एया कले बेटर हो एंड नेवर सजेस्ट एडा माइंड रे रखिबे अपन कहली यू आर नॉट ए रेवोल्यूशनरी अपन विप्लवी न सेठी जाई कि अपन रेवोल्यूशन आनिबेनी सेटा अपन ए ओके radical solutions to any problem केबे भी देबे ओके incremental solutions देबे एबे सिचुएशन जा अछि ताठू आस्ते 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 incrementally केमती बेटर होबो ओके very very important ठीक अछि इंक्रीमेंटल सॉल्यूशन सो जदि आपण को गला कि केमती आपण सपोज यू आर गिवन द रिस्पांसिबिलिटी आपण पेंडेंसी ऑफ केसेस केमती कमेबे ओके तो करंटली जा जा सब सिस्टम अछि कोठी डिले होछि अधिका सेही जिंसरा ऊपर टिके करिवे ओके तो हम स्टेप बाय स्टेप तपर आपण को आंसर ता दबर अछि ओके सो फॉर रेडिकल सॉल्यूशन कोन तार सर मु एआई इंट्रोड्यूस कर दे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन चाइना कोच ओके हमें भी कॉलम के जगह रे फॉर एग्जांपल ट्रैफिक कोड्स ठीक अछि तो सेठी ह्यूमन बीइंग रहया दरकार नहीं ओके कैमरा रे कैप्चर हेची ये बाबू एति की स्पीड रे जाउतिले
ओके तो जदि किसी कथा ही नहीं he has to pay the fine जदि न पे करिवो तले after some days okay तो by default जा हबा तो हबो right human being रे इंटरफेरेंस दरकार मु जदि शेयर धरिबी चाइना एबे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत यूज करछ लोअर कोर्ट्स रे इवन क्रिमिनल केसेस रे बट इंडिया रे सेटा हबाटा टिके डिफिकल्ट मु जदि चाइना को देखि से रेडिकल सॉल्यूशन देली कि सर हमें एआई इंट्रोड्यूस करबा ए जो पेटी ऑफेंसेस और जो पेटी केसेस अछि एगुडा सीधा कंप्यूटर को दे दो सी तार फटाफट दिन को 10,000 केस सॉल्व कर दे ठीक अछि गोटे टेम्पलेट दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करी से सॉल्व कर दे तो दैट इज अ रेडिकल सॉल्यूशन से टाइप रो सॉल्यूशन केबे दबार नहीं तो आमे आपण ए कहि परिबे कि हमें टेक्नोलॉजी यूज करि परिबा ओके टिके बेटरमेंट पे बुझि पाले तो सो ऑलवेज डोंट गिव रेडिकल सॉल्यूशंस इंक्रीमेंटल सॉल्यूशन देबे जोड़ा कि पॉसिबल इंप्लीमेंट करिबा जो पोजीशन रे आज हमें अछि प्रेजेंट रु और बेटर केते हे पारे यस एनी डाउट्स के को पचर Thank you, sir. Sir, I wanted to ask this that like how many marks are divided for the physical presentation and the way we answer and the way the content is like how many marks are divided for that? सॉरी को पहले So what I was asking is like what is the marks fixed for the way of physical presentation, the way we speak, the content, and I was asking the allocation of marks. Like so for example 10 marks, 20 marks, 30 marks, like in no that no way. nothing of that sort okay सेमती किछि नथै overall they'll ask you some questions that the you know finally they award some marks. Okay, sir. Thank you, sir. It is not based on like 10 questions, each question 10 marks. Okay, I don't think that is the process that they follow. Okay, sir. Thank you, sir. Yes, anyone else? So this much you have understood. Okay. If you just recollect your thoughts, if you want to ask anything, you can ask. Sir, in special achievements and in social community level achievements, we need to show the proof that we have achieved No, this no, no, and nothing, nothing. You don't see only testimonials or certificates that you have to take that is listed there. You don't, suppose you are saying that I'm NCCC certificate. You don't have to take your NCCC certificate. Okay. They just want those certificates which they've asked you to take. If you are claiming something, they'll ask you based on that. You don't have to produce any certificate. Okay, but it is better not to bluff or do something like that because very senior people easily they can okay uh, they can trap you. If they find that maybe what you're saying is not correct, they'll ask you certain questions and it will be very clear that actually you have not done it. So rather you say that I don't have a hobby. Okay, it's better to just say that I don't have a hobby rather than faking it. Okay, so suppose I'll read for 10-15 days about gardening. Okay, এটা बहुत थोड़ा हुए ओजेस रे भी हुए ओएस रे भी हुए सिविल सर्विस रे हुए ओके कि आपण गोटे किछि थियोरेटिकल नॉलेज नै कि जिबे और सेठी एक्चुअली से थियोरेटिकल नॉलेज आई गिव यू वेरी गुड एग्जांपल लास्ट ईयर इन सिविल सर्विस 2021 रे ओके तो सेमती से जने हमर कैंडिडेट थिले जे कि एक्चुअली से गार्डनिंग तो जॉब प्रोफाइल एमती थिला गार्डनिंग चांस नथिला बट दे दैचंदी गार्डनिंग आ कुकिंग आ गोटे सेमती ठीक अछि तो सेगुडा भाबी चिंती कि देबे कुकिंग माने कोन आपण व्हेन यू आर सेइंग दैट माय हॉबी इज कुकिंग और 2 मिनिट नूडल्स कर दो कि ताको जदी कुकिंग भाबु छन ताले असुविधा ओके हॉबी उडा तो काली मु कहबी यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक रीडिंग इज नॉट ए हॉबी ठीक अछि रीडिंग सर्टेन
सपोज आपण कहउचंती मु एनी ब्लैक पढुची किबा मु गोटे पर्टिकुलर ऑथर रो कि पर्टिकुलर जॉनर रो बुक्स पढुची ओके रोमांटिक नॉवेल्स हला कि पैट्रियोटिक नॉवेल्स हला ठीक अछि हॉरर स्टोरीज हला सेटा आपण कहया पड़ियो ओके आउ गोटे हला सेटा सिविल सर्विस रो एग्जांपल मु दउतली तो सीए लिखितले रीडिंग न्यूज़पेपर हॉबी ओके बट जे सिविल सर्विस में प्रिपेयर करछि रीडिंग न्यूज़पेपर तो हला तार रिक्वायरमेंट हॉबी कोड अछि होला हॉबी और पास टाइम भीतर डिफरेंस टा बुझंतु ओके तो हॉबी और पास टाइम में कोन हॉबी रे टिके किछि आपण व्हाटएवर किछि गोटे प्रोडक्टिव बारुछि इट मे बी मटेरियलिस्टिक और इट मे बी स्पिरिचुअल इन नेचर आपण गोटे किछि काम करछन्ती जोडा कि बाहर लोक देखले से भाबियो कि को पे एटा करछन्ती एत किछि लाभ ही नै बट आपण को सैटिस्फैक्शन दोछ तो आपण को किछि यू नो गोटे साइकोलॉजिकल कि फिलोसॉफिकल किछि आपण सेतरे पाउछन्ती तेणु सेतरे आपण सेटा आपण हॉबी कहि परिबो हॉबीटा जोटा सेटा यू नो दैट इज डन विदाउट एनी प्रेशर ठीक अछि सो किछि प्रेशर आपण ऊपर किंबा किछि गोटे दायित्व आपण ऊपर नै कि हां आपण सेटा करिवार अछि आपण निज इच्छा रे करछ ठीक अछि सेटा हला हॉबी आउ पास टाइम कोन जेंति केते जगह रे आपण देखिबे वाचिंग टेलीविजन ओके वाचिंग टीवी इज पास टाइम सो हॉबी नु ठीक अछि हां आपण जदी पर्टिकुलर ताको स्पेसिफाई कर देबे वाचिंग लॉ रिलेटेड सीरीज कि कोन सेंति कले त ठीक अछि रा पुछिया सो सेत पई इट इज वेरी इंपोर्टेंट कि हमें गोटे बाय गोटे ताको डिस्कस करिवा हमर लेखि कि पठेले मु कहि देबी आउ कोन से चेंज करिया अछि हॉबी जदी दउचंदी मैक्सिमम 2 पांचटा हॉबी लेखंतनी के गोटे हेले सबटु भलो जदी आपण भाबुछन यू कैन हैंडल 2 देन 2 आपण गार्डनिंग कथा लिखि देबे से तापर आपण किचन गार्डन धरंतो अछि आपण ओके तो से आपण को पचार देबे कि आपण फास्फोरस रो कोन दरकार हुए आपण फास्फोरस केमते इंश्योर करते आपण फास्फोरस आपण प्लांट को आसीयो बोली कोन दउछन ओके ऑर्गेनिक जोटा कि आपण फर्टिलाइजर्स हला कंपोस्ट फॉर एग्जांपल आपण कंपोस्ट केमते बनौछन पिट्रे बनौछन ना बकेट रखछन ना कोन करछन सो माने जदि आपण एक्चुअली करि ना जो पाठ पढी कि करछन माने जे बुक पढिछन्ती सेटा प्रॉब्लम हे जो आपण को फूल लगैछन्ती एटा गोटे लास्ट ईयर पचरा एटा गार्डनिंग रे आपण ओडिसा रे कॉमन फूल कोन से भुवनेश्वर रे पिले कोन फूल लगै मंदार कहिलो तो पचले से देखिए मंदार रे गोटे एमती उल भलिया गोटे पोको लागि जे व्हाइट व्हाइट टाइप रो कोन से पोको कोन कोनती से जो केबे तो माने गार्डनिंग करि नांती जे करिथिबो से निश्चित जानथिबो केना सब 3-4 मास ने जहा भी हेले से पोको लागे ओके सो रादर देन दैट यू से मोर किछि नाही ओके हॉबी नाही किछि असुविधा नाही से हॉबी ऊपर 2-3टा क्वेश्चन पचार जानते पचारिबेनी से ताको इच्छा रे पचारिबे ओके बट ब्लफिंग करिवे आउ जेते होउची आपनकर सीआईएफ रो भूलबाल जिंस लिखिले तो ओमिट वन थिंग इज सेपरेट थिंग मु पीएचडी करछ किंतु मु लेखुनी कि मु पीएचडी करछ एक्सेप्टेबल ओके मु मिछो कोन कथाटा हला कि मु सेटा ओमिट कर दे मु एतिक लेखिले कि मु एलएलबी करछ सत कथाटा मु एलएलबी करछ दैट्स अ डिफरेंट मैटर कि मु पुनी यू नो एलएलएम करी कि पीएचडी करछ बट मत बत सेटा दबार नै ओके मु नेट भी क्वालिफाई करछ किंतु जेहेतु मु एलएलएम लेखुनी त नेट भी लेखिबिन एगुडा के भाबी चिंती करी बिकॉज इट इज कंप्लीटली पर्सनल डिसीजन आपण यदि हायर क्वालिफिकेशन देखेबे ऑब्वियसली एज कंपेयर्ड टू एलएलबी जे ग्रेजुएट अछंती तो तांको अपेक्षा आपण को टिके हायर लेवल रे क्वेश्चन एक्सपेक्ट करिवे आ बेटर आंसर्स आपण को एक्सपेक्ट करिवे ओके सेम टाइप रो आंसर गोटे एलएलबी जे जस्ट पास करछंती तांसी कहिबे आ जने जे प्रोफेस करछंती कि मु एलएलएम करछि पीएचडी करछि सी कहिबे ताले ऑब्वियसली एलएलएम वाला को कम मार्क मिलिबो ओके आउ एलएलबी वाला को अधिक मार्क मिलिबो जेतु सी तो कहउछि कि मु एलएलबी कर आउ गैप एटा गोटे बहुत कॉमन क्वेश्चन एटा तो मु क्लास स्टार्ट करबा आगु मते 10-15टा क्वेरीज आसी गलानी हमर ईयर गैप अछि 2 इयर्स नै कि का तो 10-15 इयर्स की गैप अछि किछि नै अपन डायरेक्टली कहबे सेटा कि सर मु प्रिपेयर करछु से तोड़ प्रिपेयर करछु लोअर कोर्ट रे बे एक्सपीरियंस पई मु लोअर कोर्ट रे अछि कि जा यदि अपन कोर्ट जाउ नांती ताले मु पिला मु पढौछि एट द सेम टाइम मु जुडिशियरी पई इंटरेस्ट अछि ओके एक्चुअल जिंसोटा कहि देले सो लास्ट ईयर देयर वाज अ सिलेक्टेड कैंडिडेट ताकर भी इंटरव्यू अपन देखिबे गोटे जगह रे जने एक्सटर्नल हमरो एठी जो मॉक हेतला 50 जंदी
कि अरे बाबा तुम्हें 7-8 वर्ष है ओके प्रिपेयर करते से कहली मु प्रिपेयर करूची ओके आगुरु भी थोड़े इंटरव्यू देछि बट हेनी व्हाटएवर तो तुम्हें प्रिपेयर करूचो ओके सो तुम्हें कोर्ट को कहीं जाओ कोर्ट को से जाऊ न से कहले कि सर एक्चुअली मु घर ऊपर डिपेंडेंट नुह हबा पे चाहूनी और सस्टेनेंस पे फिर मु ट्यूशन करे जेतु मु ट्यूशन करे सर मते से टाइम आ मते कोर्ट जा पे टाइम है तो मु ओजेएस पे प्रिपरेशन करे आउ ट्यूशन करे तो पूरा ऑनेस्ट आंसर है और तापर आ ऊपर किछि क्वेश्चन भी पचारिया बार ना ठीक अछि so he got decent marks in interview and he was selected कथड़ा हला ब्लफिंग करिवेनी और ओपन बुक भी हेजिवेनी सपोज किछि गोटे ट्रेजेडी हेछि मो संगे मु आ सेठी सिंपैथी गेन करिया पे कहबेनी सर ठीक अछि बट एक्चुअल जिंसटा जोटा सेटा कहि देले आ यू डोंट हैव टू मेक अप स्टोरीज अब मेकअप जदि करिवे स्टोरी गुडा तारे कोन हो ना जदि प्रथम रु पचार दिछन गोटे कथा आपण कोन कहिछन तापर आ से लॉ रो क्वेश्चन पचारले आपण टोटली भूली जिवे मु कोन कहिछि प्रथम रे ओके पुनी लास्ट आडू से जस्ट रिपीट द सेम क्वेश्चंस अगेन वेदर योर आंसर इज करेक्ट और नॉट आपण भूल जइतिबे से तळे ओके काहे ना आपण तो सेही मोमेंट रे भाबी कहिछन ना सो ब्लफिंग एसिंग करिवेनी चेष्टा करिवे मिछ न कहबे ओके आउ मु या कोन की पूरा ओपन बुक है कि पूरा सत कहिदेबे मिछ न कहबा आउ पूरा सत कहबारे बहुत डिफरेंस अछि ओके एंड यू बीइंग फ्रॉम द लीगल फ्रेटर्निटी सेटा तो नियति भाबरे आपण जानथिबे ओके तो से आपण को मिछ कहबार नै पूरा सत दिन न कहउछन भी ठीक अछि चलिबो ओके बट मिछ कहबार नै ब्लफिंग करिवार नै गेसिंग करिवार नै एति कि जदी बहुत ही बेसिक जिंस आपण यू टेक केयर ऑफ इट एटलीस्ट तो आपण को 50-60 मार्क आसी ओके सो आउथर रिट्रेट करबी आपणकर जो कंपोजर टा एटीट्यूड टा तांको केमिति लागुची बहुत ही एग्रेसिव लागुची कि आपण इंटेंशनली करू नांती किंतु सेटा मे बी नेचुरल वॉइस आपण को सेमते सी जदी भाबी रे भाबी ये तो बहुत ही एग्रेसिव अछन ओके ताले से थरे भी मार्क्स कटिबो तो टिके हम्बल रहै पे चेष्टा करिवे ओके सेटा बहुत इंपोर्टेंट और सेटा मिरर इंटरव्यू रे निजे देखि देबे मिरर इंटरव्यू रे आउटे जिंस भी आपण कर परिबे जेतोले मिरर इंटरव्यू दउचंती यू record it with your camera phone माने अपन स्मार्टफोन रे रिकॉर्ड कर दे मिरर टा को रिकॉर्ड कर दे ठीक अछि हाफ एन आवर तो करिवे ना तापरे सेटा प्ले करी के देखि देबे कोठी कोन आपण भूल होइछ आपण आ भलो रे रेड करी जदी आउ के अवेलेबल अछंती घरे की रूममेट सी आपण पे जदी रिकॉर्ड कर दबा आउरी भलो ओके सो दीस आर सर्टेन थिंग्स जोटा की सम ऑफ द फंडामेंटल थिंग्स व्हिच आई टोल्ड यू व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर द इंटरव्यू आउ तापरे इंटरव्यू देले से दिन कौन हम बेसिकली तो आपणकर ड्रॉ फ्लॉट्स हम ओके आपणकर एमती नहीं कि सपोज आपणकर से सीरियल नंबर पड़ो 1 2 3 एमती कि जहाँ भी 1 पड़ी ता माने नो कि आपण फर्स्ट रे जिवे तो लॉट्स से माने करंती लॉटरी सिस्टम ओके तो लॉटरी सिस्टम हिसाब रे आपण 4 ही पड़लो सो 1 2 3 गला परे ओके जे लास्ट लोक दिबो इफ यू वांट टू यू नो यूज द वॉशरूम एंड ऑल ता आगु जाई कि आपण यूज करी ओके पानी पियर अछि जहाँ भी be settled at least 10-15 minutes before he comes okay entry करिवे ठीक अछि कॉन्फिडेंटली एंटर करिवे नॉक करी के सेडा मु कोई भी खाली डिटेल्स रे और मॉक इंटरव्यू डायरेक्टली करिवे नॉक करी के एंटर करले कॉन्फिडेंटली आके ठिया की कहिवे ओके जहां भी आपण नमस्कार कर परिवे गुड मॉर्निंग कहि परिवे गुड आफ्टरनून कहि परिवे डिपेंडिंग ऑन योर टाइमिंग ठीक अछि स्माइल टा रहिला से कहिवे आपण बसंतु तापर बसिवे कॉन्फिडेंटली स्टार्ट आंसरिंग ओके कोनोसी नर्वस रेस रो साइंस आपण रखिबे तपर सरला इंटरव्यू तो जा हैला सरला परे अगेन विथ अ स्माइल ग्रीट देम थैंक यू कहि पळासिबे ओके नमस्कार करिबाटा मच बेटर एज कंपेयर्ड टू गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून यू नो बट अगेन इट इज योर इंडिविजुअल चॉइस ठीक अछि वंस यू आर आउट किछि कथा तो नहीं आपण जा डॉक्यूमेंट बैग पैक धरिवे स्ट्रेट गो होम ओके एटा मु सब बेले सब पिला कोए कोन पई आपण जे तो जस्ट बाहरिवे कंपाउंड रू तो सेठी अलगा जो सब कैंडिडेट्स अछंती ताकर गार्डियंस पेरेंट्स से मन सब थिबे ओके सो डोंट डिस्कस एनीथिंग जस्ट टेल कि हम पचरसी कि भलो हैला ठीक है ओके डोंट डिस्कस एनीथिंग आउट भी कथा सो सी अल्टीमेटली आमो एम टा कोन आमो एम टा वी हैव टू क्रैक द एग्जाम 101 टा पिला परीक्षा देबे ठीक है तो ता भीतर 57 टा वैकेंसीज अछि ओके अच्छा से माने सपोज गोटे पिला को 20 टा क्वेश्चन पचर धरो बेसी भी पचर केबे केबे सो 20 into 101 ओके सो
2000 क्वेश्चन से आनिबे कोठु ता माने कोन 70-80 क्वेश्चंस विल बी रिपीटेड आपण फर्स्ट डे जाई इंटरव्यू देले आपण को जहाँ जहाँ पचार सेकेंड डे कौन जो लोक आसो पूरा अलग पचार देवे केबे नु 50-60% क्वेश्चन सेम थी ओके तेणु गोटे जिन मन रखिए अल्टीमेटली वी आर ऑल हियर टू क्रैक द एग्जाम तेणु कौन पचरा है कौन ये है सेगुड़ा जनरली मु सब बेले कहे सेटा केबे शेयर करिवे लास्ट डे ऑफ द इंटरव्यू पर ठीक अच्छे लास्ट डे ऑफ द इंटरव्यू पर आउ भी गोटे कथा एटा तो मु गोटे कथा कहली तो बहुत जन कहते कि नहीं एमती कहीं हेल्प करा जदि सतरे आप हेल्प करार इच्छा अच्छे ताले किसी असुविधा नहीं सतरे शेयर करेंगे ओके बट आई एम अगेंस्ट इट किसी शेयर करा दरकार ना किंतु एट द सेम टाइम भूल शेयर करें ओके अनफॉर्चुनेटली बहुत जन मु जानी एग्जांपल्स भर के जन रैंक भी पाइले से भूल जिनसा कहते मो इंटरव्यू में मत 10टा क्वेश्चन पचारे जी टी एक्सपीरियंस थी ये डोमेन रे से आराम से धर तो बाबा केबे भी ये क्वेश्चन पचार ओके सो रादर देन दैट आपको इंटरव्यू सरू लास्ट डे रो इंटरव्यू सरू देन यू कैन शेयर कि कौन कौन इंटरव्यू पचार कहीं एगुड़ा कौन इट कैन नॉट बी वेरीफाइड ठीक अच्छे किए कौन पचारा किए वेरीफाई कर सो बेटर टू रिमेन साइलेंट दैन टू मिसगाइड अदर्स ठीक अच्छे आई होप ऑल ऑफ यू बिलीव इन द थ्योरी ऑफ कर्म राइट तेणु आपण कहबार नहीं सेटा आपन राइट न भी कहतु बहुत भल कहीं जमी मुझे कहली 2000 क्वेश्चन कि कोटू यूनिक क्वेश्चन 2000 आसो ठीक अच्छे तो आउे सेम लोक रे ओके एमती ना कि सबुदिन जजेस मैंने चेंज है ठीक अच्छे ऑलमोस्ट सेम लोक रे तेणु सेम क्वेश्चन ही रोटेट हम ओके सो फ्रॉम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू यू कैन गिव योर ट्रांसक्रिप्ट तेणु मु कौन मु जो ट्रांसक्रिप्ट गुड़ा आपको एथरक देवी एगुड़ा लास्ट ईयर जो मैंने सब पाई मु केतले पचारे से वेल रिजल्ट बाहरला पर से टाइम रे तुम पचारे ओके अनलेस यू हैव योर के रिलेटिव्स की बहुत भलो फ्रेंड अछंती जे कि केबे आपन को मिछ कहबेनी कि भूल कहबे सेमती केस अछि इट्स अ डिफरेंट मैटर सेटा आपन पर्सनल गारंटी रे नउछंती बट नॉर्मली इफ यू डोंट वांट डिस्क्लोज करंतु मु किंतु मिसगाइड भी करते ओके सो दिस इज आफ्टर यू फिनिश द इंटरव्यू करू ओके तापरे सर्टेन अदर थिंग्स आर देयर गोटे गोटे पॉइंट करके हमें ताको काली देखिबा फर्स्ट इज हाउ टू फिल अप द सीआईएफ मु पॉइंट बाय पॉइंट सब गुडा कहबी कोठी कोनटा करिवार नाही सेटा भी कहबी ओके सो दैट पार्ट इज देयर एट द सेम टाइम से हॉबीज आउ इंपोर्टेंट अचीवमेंट्स सेटा आपण कोन चाहउछंती आपे आपण टिके माइंड रे भाबी देथिबे सो दैट आफ्टर द क्लास यू कैन सेंड मी अ सैंपल कि मु एई चारटा मास्टर दवा पे चाहूची ता भितरु ओके मु कहली मैक्सिमम 3 दे परिबे तो से को 3टा रहबा कथा आउ हलो अचीवमेंट जति अछि गोल्ड मेडलिस्ट यूजीसी नेट क्वालिफाइड जेआरएफ क्वालिफाइड ठीक अछि भलो इंटर्नशिप कोठी करचती एगुडा निहाती भाबरे कहबा दरकार आपु लुचेई कि लाभ ओके गॉट इट fine so if you have any doubts you can ask or we will stop here okay for today and tomorrow we will continue with the DAF detailed application form हम CIF जोटा बोलते हैं PSC रे तार डिटेल्स टा केमति भरिबे सेटा कहबी प्लस आउ केतेटा सिचुएशंस अछि do's and don'ts that I will discuss tomorrow so after tomorrow आपनकर Wednesday will be holiday Thursday ru okay so you can book the slots tomorrow or आज भी पठा देला हबो Thursday ru जो माने तो पे चाहउछन इंटरव्यू okay but from today what you have to do today mu mirror interview कहिछि okay mirror interview you make your own questions okay once the questions are uploaded then you can use those questions और practice करतो okay at least half an hour each session को make practice करतो record करतो निजे तापर देखो एनालाइज करो फाइन any doubts if you are having you can ask me just a minute
Okay, so done then, or we will stop here. ଆଉ ଯଦି କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାର ଅଛି କୁହନ୍ତୁ। sir ଯଦି ମାନେ ମୁଁ ଆସିପାରୁନି ଅଫଲାଇନ୍ mock କୁ ତାହେଲେ can I convert it to online mock? Yeah, of course, all the mocks will be available online also. ठीक ଅଛି ତ ଯଦି ଆପଣ ଦୂରରେ ରହୁଛନ୍ତି, it may not be possible for everyone to come to Bhubaneswar. ଯଦି ଆପଣ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଗରୁ ସେଟା ଇନଫର୍ମ କରିଦେବେ କି ମତେ ଅନଲାଇନ ମକ୍ ଦବାର ଅଛି, ଠିକ ଅଛି ତ ତାର ସେଇ 3 to 12 to 3 ଭିତରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଲଟିଂ ହେଇଯିବ। ଓକେ, Okay sir. ଅନଲାଇନ ମକ୍ ର ପ୍ରୋଜ ଆଣ୍ଡ କନ୍ସ ମୁଁ କହିଦଉଛି। ଏମିତି ବି ଅଛି କି ପିଲା ଖାଲି ଅନଲାଇନ ମକ୍ସ ହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଓକେ, ଇଫ ୟୁ ରିମେମ୍ବର 2020 କି 21 ରେ ଯିଏ rank 1 ଥିଲେ ଇର୍ଷିତା, ଓକେ ସୋ ତାଙ୍କର ଖାଲି ଅନଲାଇନ ମକ୍ସ ହିଁ ଥିଲା। ଓକେ, ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ଯିଏ rank 1 ଥିଲେ ସେ ଫିଜିକାଲ ମକ୍ସ ଦେଇଥିଲେ, ବଟ୍ ତା ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର ଯୋଉ ଯିଏ rank 1 ଥିଲେ ସେ ସବୁ 7-8ଟା ମକ୍ସ ଦେଇଥିଲେ, ବଟ୍ ସବୁ ଅନଲାଇନ ହିଁ ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିରେ କିଛି ଅନଲାଇନ ର ଲିମିଟେସନ କଣ, ଆପଣ ବସୁଛନ୍ତି କେମିତି, ଆପଣଙ୍କ ପୋସ୍ଚର କେମିତି ଅଛି, ସେଇଟା ଟିକେ ଆମକୁ ଜଜ୍ କରିବାଟା ଡିଫିକଲ୍ଟ ହବ। ତେଣୁ ଆମେ ଜେନେରାଲ ଜିନିଷ କହିଦବୁ କି ହଁ ଆପଣ କ୍ରସ୍ ଲାଇଟ୍ ବସନ୍ତୁନି, ଓକେ ହାତ ପୋଜିସନ ହବା ଦରକାର, ମେରୁଦଣ୍ଡ ସିଧା ହବା ଦରକାର, ଓକେ ବ୍ୟାକବୋନ ସିଧା ହବା ଦରକାର, ଏଗୁଡ଼ା ଆମେ କହିଦବୁ। ବଟ୍ ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହଉଛି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ଅଫଲାଇନ କି କ୍ଲାସରୁମ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଇଜିଲି ସେଇ ଜିନିଷଟା କରିହବ, ଓକେ ଜାଣି ହବ ସେଇଟା। ବଟ୍ ଯଦି କାହାର କନଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଟ ଅଛି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ଏଥରକ we are also trying for the 3 panel interviews ଆସୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ବାହାରୁ, ତ 3 member panel interview ଟା ବି ଯେମିତି ଅନଲାଇନ କରିହବ। ଓକେ, so that we are arranging for that, ତ ଅନଲାଇନ ବି ଆପଣ କରିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। sir ସବୁ ଗୁଡା ଯୋଉ ମାନେ ଯୋଉ 2 panel ଟା ଅଛି ସେଇଟା ଅନଲାଇନ ହିଁ ହବ? 3 panel ଟା ବି ଆପଣ ନାଇଁ ସବୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଜ ଅନଲାଇନ ଆଣ୍ଡ ଅଫଲାଇନ ଦିଟା। ସପୋଜ ଯିଏ ଆସିକି 2 panel ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବି ଅଫଲାଇନ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେଇପାରିବେ, ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଦି ଜଣ ମେମ୍ବର ରହିବେ ହଁ ମିନିମମ୍ 2 ଜଣ ରହିବେ। ହଁ ଓକେ ସାର୍। ଓକେ ସାର୍ କିଛି ଅଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ମାନେ ସବଜେକ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କିଛି ଅଛି କୋ ମାନେ ହଁ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ସେଟା, ଯୋଉ 5ଟା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଜ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ଡିଭାଇଡ କରିବା 5ଟା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଜ ଟା, ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଓକେ ଆଜି କି କାଲି ଦେଇଦେବି ସେଟା। ଓକେ, ବିଫୋର ଥର୍ସଡେ ୟୁ ୱିଲ୍ ବି ହାଭିଂ। ଓକେ ସାର୍। ଯୋଉ ମାନେ ବସିବେ ଯିଏ ବି ପ୍ୟାନେଲ ରେ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ବି ମକ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ବସିବେ, ଇଜ ଏନି ଅଫ ଦେମ୍ ନିଜେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ତ ନୁହନ୍ତି ନା ସାର୍, ମାନେ ନିଜେ No, of course not, of course not. ନିଜେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ କେମିତି ରହିବେ? ଓକେ, ତ ବେସିକାଲି ଏକ୍ସ ଜୁଡିସିଆଲ ଅଫିସର୍ସ କିଛି ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ସର୍ଭିଂ ଜୁଡିସିଆଲ ଅଫିସର୍ସ କିଛି ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଓକେ, ସେମାନେ ଏବେ ସବୁ ସର୍ଭିସରେ ଅଛନ୍ତି, ବଟ୍ ନିଜେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ନିଜେ ପରୀକ୍ଷା ଦଉନାହାନ୍ତି। ଓକେ ସାର୍। ଓକେ, ତ ସେମାନେ ନିଜେ ପରୀକ୍ଷା ଦଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରାୟ ଆକାଡେମିଆରୁ ମାନେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର୍ସ ସେମାନେ ପ୍ଲସ୍ ଯୋଉମାନେ ଜୁଡିସିଆଲ ଅଫିସର୍ସ, ଏକ୍ସ ଜୁଡିସିଆଲ ଅଫିସର୍ସ କି କେତେ ଜଣ ସର୍ଭିଂ ବି ଅଛନ୍ତି ଏବେ, ସେଇମାନେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ରହିବେ। ଓକେ, ଯିଏ ଏଥରକ ଦଉଛନ୍ତି ଅବଭିୟସଲି ସିଏ କେମିତି ଜଜ୍ କରିବେ, ରାଇଟ୍? ତ that would be very difficult to have Yes, that. that is because also it's a thing that je douchandi se dele bhi it would be unfair to us also. ସେଥିପାଇଁ of course ସେମିତି ହବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ରହିବି ବୋର୍ଡରେ, ଓକେ ଦେନ୍ ଯୋଉଟା କହିଲି ଗୋଟେ ଆକାଡେମିଆରୁ ଜଣେ କିଏ ରହିବେ। ଅଲସୋ କିଛିଟା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଜ we are trying to have a psychologist also, ଠିକ ଅଛି, କାହିଁକିନା ତା ଉପରେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ କିଛିଟା ଆସେ। ବଟ୍ ନର୍ମାଲି ଆମର ଆକାଡେମିଆରୁ ଆଉ ଜୁଡିସିଆଲ ଅଫିସର୍ସ ସେମାନେ ହିଁ ରହିବେ। Okay sir, then that would be great ଯଦି 3 panel ଟା ବି online ହେଇପାରିବ, then that would be really 3 panel ଟା we are trying. Actually last year କଣ ହେଇଥିଲା କି one of the panelists ଯେ କି law secretary ଥିଲେ, ତ ସିଏ basically he was like କି recording ପାଇଁ କିଛି ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଇଟା ଆଉ ଇଏ କରିପାରିଲୁନି। ବଟ୍ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସରେ ଯୋଉ ହେଲା ଏଥରକ 3 panel 4 panel ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଜ ଗୁଡା ବି ଅନଲାଇନ ହେଲା। ତ ଜୁଡିସିଆଲ ସର୍ଭିସ ଭିତରେ ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ବି ଆପ୍ରୋଚ କରୁଛୁ ସେ କଣ୍ଡିସନ ଟା ଅଲରେଡି କହିଦଉଛୁ କି ସେଇଟା ରେକର୍ଡିଂ ହବ ବୋଲି। ଯୋଉମାନେ କନସେଣ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ଆସିବେ। ଓକେ, ତ ସେଇଟା ବି ଅନଲାଇନ ହବ ଆପଣଙ୍କର। 3 panel ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଟା ବି ଅନଲାଇନ ହବ। Okay sir. Okay. Okay sir. Okay, fine. So we'll stop here then. Thank you all. Thank you sir.